بسم الله الرحمن الرحيم. Chapter 8 Thermal Properties of Matter Numerical Questions. Now problem 8.1 Temperature of the water in a beaker is 50 degrees centigrade. What is its value in Fahrenheit? टेम्परेचर हमें डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर दिया हुआ है 50 डिग्री सेंटीग्रेड और हमने टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट फाइंड करना है. सो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट के लिए जो फार्मूला है 9/5 इंटू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32. By putting the value of temperature in degrees centigrade, we will get the temperature in Fahrenheit that is equal to 122 degree Fahrenheit. Now problem 8.2. Normal human body temperature is 98.6 degree Fahrenheit. Convert it into Celsius and Kelvin scale. टेम्परेचर हमें फ़ारेनहाइट के अंदर दिए हुए 98.6 फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर इन केल्विन हमने फाइंड करना है. तो टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड के लिए जो फार्मूला है वो है 5/9 टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 और टेम्परेचर इन केल्विन के लिए जो फार्मूला है वो टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273. Now by putting the value of temperature in degree Fahrenheit, we will get temperature in degrees Celsius that is equal to 37 degrees centigrade, and by putting the value of temperature in degrees centigrade, we will get temperature in Kelvin that is equal to 310 Kelvin. Now problem 8.3. Calculate the increase in length of an aluminium bar of 2 meters long when heated from 0 degrees centigrade to 20 degrees centigrade if the thermal coefficient of linear expansion is 2.5 into 10 raised to power minus 5 per Kelvin. इधर हम इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और इन केल्विन इट इज़ 273 केल्विन. फाइनल टेम्परेचर T2 हमें दिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 293 केल्विन. Length of aluminium bar L naught is equal to 2 meter. Thermal coefficient of linear expansion हमें दिया हुआ है 2.5 into 10 minus 5 per Kelvin. हमने इंक्रीज इन लेंथ दैट इज L माइनस एल नॉट हमने फाइंड करना है. तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा इंटू एल नॉट इंटू T2 माइनस T1. And by putting the value of thermal coefficient of linear expansion and L naught and T2 minus T1, we will get L minus L naught is equal to 1 into 10 minus 3 meter or 0.1 centimeter or 1 millimeter. Now problem 8.4. A balloon contains 1.2 meter cube of air at 15 degrees centigrade. Find its volume at 40 degrees centigrade. Thermal coefficient of volume expansion of air is 3.61 into 10 minus 5 per Kelvin. Initial temperature in degrees centigrade हमें दिया हुआ 15 degrees centigrade और in Kelvin it is 288 Kelvin. Final temperature 40 degrees centigrade or in Kelvin it is equal to 313 Kelvin. Thermal coefficient of volume expansion beta हमें दिया है 3.61 into 10 minus 5 per Kelvin. Initial volume of air in balloon V naught is equal to 1.2 meter cube. To find final volume of gas V2 formula इधर जो हमें पास है वो है V is equal to V naught into 1 plus beta into T2 minus T1, and by putting the value of V naught, beta and T2 minus T1 we will get volume is equal to 1.3 meter cube. Now problem 8.5. How much heat is required to increase the temperature of 0.5 kg of water from 10 degrees centigrade to 65 degrees centigrade? गिवन है हमें इनिशियल टेम्परेचर हमें दिया हुआ है T1 10 डिग्री सेंटीग्रेड और फाइनल टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 65 डिग्री सेंटीग्रेड. मास ऑफ वाटर हमें दिया हुआ है 0.5 kg और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमें दी हुई है 4200 जूल पर kg पर केल्विन. तो फाइंड हीट रिक्वायर्ड क्यू हमने फाइंड करना है. तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू MC डेल्टा T, and delta T will be T2 minus T1, and 65 minus 10 degrees centigrade we will get delta T is equal to 55 degrees centigrade. और डेल्टा Q के लिए जब हम इसके अंदर mass और स्पेसिफिक हीट और डेल्टा T की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा Q आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 115500 जूल.
Now problem 8.6. An electric heater supplies heat at the rate of 1000 joule per second. How much time is required to raise the temperature of 200 gram of water from 20 degrees centigrade to 90 degrees centigrade? गिवन है हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर T2 90 डिग्री सेंटीग्रेड, mass of water 200 gram or in kg it is equal to 0.2 kg. Rate of heat supplied by heater power हमें दी हुई है 1000 joule per second. Specific heat of water C is equal to 4200 joule per kg per Kelvin. एंड टू फाइंड टाइम हमने फाइंड करना है, तो फॉर्मूला जो इधर लगेगा वो है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी और पावर इज इक्वल टू हीट बाय टाइम. नाउ डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 minus T1 and by putting the value of T2 and T1 we will get delta T is equal to 70 degrees centigrade और डेल्टा Q जब हम फाइंड करेंगे तो इधर हम वैल्यू पुट करेंगे मास की, स्पेसिफिक हीट की और डेल्टा टी की. तो डेल्टा क्यू हमारे पास आ जाएगा 58800 जाउल. नाउ हमने टाइम फाइंड करना है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है पावर इज इक्वल टू हीट बाय टाइम, और जब हम टाइम फाइंड करेंगे तो टाइम इज इक्वल टू हीट बाय पावर. By putting the value of heat and power we will get time is equal to 58.8 seconds. Now problem 8.7. How much ice will melt by 50,000 joule of heat? Latent heat of fusion of ice is 336,000 joule per kg. इधर हमें दिया है heat supplied to ice delta Q 50,000 joule. Latent heat of fusion HF हमें दिया हुआ है 336,000 joule per kg. हमने mass find करना है, तो इधर जो फॉर्मूला लगेगा वो है डेल्टा Q is equal to M cross HF. So by putting the value of delta Q and HF we will get mass is equal to 0.1488 kg or 148.8 gram or 150 ग्राम के. ये इक्वल हो जाएगा जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 148.8 को. नाउ प्रॉब्लम 8.8. फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड. इनिशियल टेम्परेचर हमें दिया है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड. डेल्टा टी क्या हो जाएगा T2 minus T1, तो 0 minus 10 डिग्री सेंटीग्रेड इट विल बी 10 डिग्री सेंटीग्रेड. mass of ice 100 ग्राम हमें दिया हुआ है. स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस होती है 2100 जूल पर केजी पर केल्विन. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर C2 से हमने डिनोट किया इसे, वो होती है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन HF जो हमने पीछे क्वेश्चन में भी गिवन थी 336,000 जूल पर केजी एंड हमने हीट रिक्वायर्ड फाइंड करनी है. इधर फॉर्मूला जो लगेगा वो है डेल्टा Q इज इक्वल टू M क्रॉस HF और सेकंड वाला फॉर्मूला जो है वो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T. थर्ड वाला है Q3 इज इक्वल टू MC डेल्टा T और डेल्टा Q हम जब फाइंड करेंगे तो हम ये जितनी भी हीट्स हमने कैलकुलेट की हैं Q1 Q2 Q3 जब हम उनको ऐड करेंगे we will get डेल्टा Q. सो डेल्टा Q1 के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो है M क्रॉस HF. By putting the value of mass and HF we will get delta Q1 is equal to 33600 joule. Q2 के लिए जो हमने फॉर्मूला यूज किया है वो MC1 delta T है. By putting the value of mass C1 and delta T we will get Q2 is equal to 4200 joule. एंड Q3 के लिए भी हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन इधर जो है हम MC2 यूज़ करेंगे C1 की जगह. By putting the value of mass C2 and delta T we will get Q3 is equal to 2100 joule और delta Q हम फाइंड करेंगे Q1 plus Q2 plus Q3 and we will get delta Q is equal to 39900 joule. Now problem 8.9. How much heat is required to change 100 gram of water at 100 degrees centigrade into steam? Mass of water 100 gram or 0.1 kg. Temperature हमें दिया 100 degrees centigrade. Latent heat of vaporization of water HV is equal to 2.26 into 10 raised to power 6 joule per kg.
हीट क्यू भी हमने फाइंड करनी है। इधर जो फॉर्मूला लगाएंगे वो है Q is equal to m cross HV. By putting the value of mass and HV will get Q is equal to 22,600 joule or 2.26 into 10 raised to power 5 joule. Now problem 8.10, find the temperature of water after passing 5 gram of steam at 100 degrees centigrade through 500 gram of water at 10 degrees centigrade. Mass of water M1 500 gram or 0.5 kg. Mass of steam M2 5 gram or 0.005 kg. Temperature of water T1 10 degrees centigrade. Temperature of steam T2 is equal to 100 degrees centigrade. The specific heat of water C2 4200 joule per kg per Kelvin. Specific heat of vaporization of water HV is equal to 2.26 into 10 raised to power 6 joule per kg. फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर T हमने फाइंड करना है, तो इधर जो फॉर्मूला लगाएंगे वो है Q इज इक्वल टू M1 क्रॉस HV और सेकंड वाला वो है Q इज इक्वल टू MC2 डेल्टा T. By putting the value of M1 and HV we will get Q is equal to 11300 joule और इसको हम लिख सकते हैं 1.13 into 10 raised to power 4 joule. And by putting the value of M2C and delta T we will get Q is equal to 2100 T minus 10. Comparing equation 1 and 2, 1.13 into 10 raised to power 4 is equal to 2100 into T minus 10. We will get 5.4 is equal to T minus 10. We will finally get T is equal to 5.4 plus 10 and T is equal to 15.4 degrees centigrade. Now that's all about chapter number 8, numerical thermal properties of matter. Thanks for watching my videos. Please share my videos, like my videos and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Take care. Allah Hafiz.